जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। कहाँ हो अभी? अभी कहाँ हो बड़े भैया? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। थैंक यू सो मच। कहाँ पहुँचे? पीरागढ़ी। अच्छा, पीरागढ़ी पहुँच गए। ओके भैया, थैंक यू। जय भीम सोनू भैया। पहले हमें बाबा साहब के दर्शन कराएं, उसके बाद मैं गुरु रविदास जी के दर्शन कराएं। अच्छा, सोनू भैया को घुमा दो खूब, ताकि ये जाके याद करें। दर्शन कर लो सभी लोग। ओके जी, थैंक यू भैया। खाना पीना हो गया? आप नहीं खाना खा के गए ना? कितना खाऊंगा? अभी 1 घंटे बाद भेज देना। अच्छा, ठीक है, भेज देंगे।
खाना पड़ेगा लेकिन काम करने जा रही हूँ।
अंजू दीदी जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? स्वागत है आपका दीदी। अलिंदर भैया जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो बड़े भैया जी? 7 नंबर लाइक कर दिया है, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच भैया। जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। पूजा दीदी बोल रही हैं सभी ग्रुप एडिटर को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय जय बीएसपी। खाना पीना हो गया है? सब ठीक ठाक है? घर परिवार में सब ठीक ठाक है भैया? आप बताइए आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं? सेम टू यू, जय भीम नमो बुद्धाय जय बीएसपी। आओगे आप लोग? खाना खा लीजिए। थैंक यू दीदी पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। अलिंदर बड़े भैया जी थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय बीएसपी। क्या हुआ भैया? अलिंदर भैया क्या हुआ आपको? बताइए भैया। क्या हुआ है भाई आपको? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ दीदी। कुछ नहीं, सर्दी जुकाम है, बुखार है, कोई दिक्कत नहीं है, दवा खा रहा हूँ, आराम है। जय भीम नमो बुद्धाय जय बीएसपी। थैंक यू सो मच भैया। सीजन ही चल रहा है ऐसा ना, मौसम चेंज के हुआ ना, सबको जुकाम बुखार आ रहा है। चेक करा लीजिए भैया एक बार बुखार। इस टाइम बहुत खराब बुखार चल रहा है, सेम प्रॉब्लम है भाई। कह तो रही हूँ पूजा दीदी सबको ऐसे हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार। रेस्ट करिए बड़े भैया जी। जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। मैंने टेस्ट भी कर रखे, बढ़िया तरीके से दवा चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय जय बीएसपी। थैंक यू सो मच बड़े भैया जी, थैंक यू। हम लोगों की बस यही दुआ है आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आप हम बहनों को याद कर लेते हैं, हम लोगों के लिए बहुत बहुत गर्व होता है कि नहीं आप लोग हम लोगों को ढूंढते हो, याद करते हो। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। पूजा दीदी थैंक यू सो मच, सेम टू यू। पूजा दीदी कैसी हो आप, और परिवार में सब लोग कैसे हैं दीदी? जय भीम। दीदी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पूजा दीदी मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए आपकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, कैसे है दीदी अभी, कैसी तबीयत है उनकी? पूजा दीदी बताना, आपकी मम्मी को ऑपरेशन हुआ था ना, अभी स्वास्थ्य कैसा उनका?
थैंक यू सो मच। सिस्टर, जिंदगी एक संघर्ष है और जिंदगी एक जंग है। जिंदगी से कभी हार नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप सब इतना सपोर्ट, इतना हम लोगों के साथ करते हैं ना, कि हम लोग उस चीज को हम लोग सोचते हैं कि ये चीज कायम रखें। आप लोगों से सीख मिलती है। थैंक यू सो मच बड़े भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। आओगे आप लोग, खाना खा लीजिए। थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू पूछने के लिए। पहले से ठीक है दीदी। ओके पूजा दीदी, ध्यान दीजिएगा। मम्मी जी का ध्यान दीजिएगा पूजा दीदी इस टाइम। अम्मा अगर लेके आवाज दिए तो थोड़ा सा चावल और चटनी, थोड़ा सा दाल ले लो। अंजू सिस्टर, मदर को क्या हो गया था? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भैया, अंजू दीदी की मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, पथरी का, टूंस। नहीं भाई, मैं अकेला चला मंजिल चला गया, कन्या बढ़ाते की कर्म बनता।
मानवर कांशी राम साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। ठीक है भैया, आप जाइए, आप आराम करिए, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। सभी ग्रुप एडिटर को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई सिस्टर सभी थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। ओके पूजा दीदी, थैंक यू सो मच। हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, आप सबसे पहले रखिए। मम्मी की तबीयत खराब, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ साथ अपना भी रखिए। बाय पूजा दीदी, बाय, थैंक यू सो मच। मम्मी को टाइम टाइम से देखिए, उनको खाना पीना टाइम से खिलाइए सिस्टर।
क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। भारती भाई सेम टू यू, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भैया, नाश्ता हो गया, खाना भी नहीं हुआ है। खाना बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद होगा। आपका बताइए, आपका हुआ? भारती भाई अपना बताइए, आपका खाना पीना हुआ भैया? संगीता दीदी, स्वागत है आपका हमारी लाइफ में। कैसी हो आप? कैसे हो कुसुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? आपका तबीयत कैसा है? दीदी आप बताइए आप कैसी हो? मेरा खाना पीना हो गया है दीदी। ओके भारती भाई, थैंक यू सो मच। मैं अभी एग्जाम देकर आ रहा हूँ। अच्छा, पेपर कैसा गया भैया? भारती भाई बताना आपका पेपर कैसा गया? थैंक यू सो मच संगीता दीदी। मैं गांव में हूँ कुसुम। अच्छा, गांव में क्या है दीदी? कब गई हो गांव? गांव कब गई हो आप? शादी बीत गया आपके घर का। हाँ दीदी, शादी बीत गया, मैं भी तो चली गई थी ना। जिस दिन से आपकी बात हुई उसके कल भर मैं चली गई थी पंजाब। फिर पंजाब से मेरे घर जब हल्दी थी जिस दिन भतवान, उस दिन आई। आप गांव कब गई हो? सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू सो मच भैया। पहले बताओ आपका एग्जाम कैसा गया? 17 तारीख की आई हूँ, शादी था गांव में। अच्छा, आप 17 को गई हो, मैं शायद 14 तारीख को या 15 को यहाँ से गई थी पंजाब। सोनू भैया चले गए दीदी। हाँ भारती भाई, सोनू भाई चले गए। सोनू भाई चले गए भारती भाई। अच्छा गया मेरा एग्जाम दीदी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा ही जाना चाहिए। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू। अब मेरा एग्जाम 5 तारीख का है। अच्छा, आज 3 हो गई। आज 3 तारीख है ना भैया? 3 की 4? आज 3 तारीख है, कल 4, परसों है। बहुत जल्दी चले गए सोनू भैया। अब आपका नंबर है ना भारती भाई? आप कब आ रहे हो ये बताओ? थैंक यू दीदी, थैंक यू। खाना नहीं खिलाई थी क्या दीदी? भैया मैंने खाना पीना खिला दिया था। शाम को आए थे, रात में रहे थे ना, रात भर रहे थे। सुबह गए हैं 10:30 उस बजे करीब। 10:30 बजे गए हैं भारती भाई। थैंक यू दीदी, संगीता दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता भाई? बताओ, बहनों के घर से भाई भूखा चले जाए? संभव है? बताओ। कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था दीदी। हाँ, मैं देख रही थी भैया, कहीं ऐसा ना लग जाए कि दीदी टाइम पे आ गई हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाया था आपसे।
हाँ, मैंने देखा आप सब्जी बना रहे थे ना, आपके पास सोनू भैया जब अच्छा आपके पास कॉल किए थे, नंबर उनके पास था कि कैसे कॉल किए थे? फेसबुक या इंस्टाग्राम से? सोनू भैया आपके पास कॉल कैसे किए थे? इंस्टाग्राम या फेसबुक से? इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाया था आपसे। अपना ईयरफोन लेके जाओ, मेरा क्यों लेके जा रहे हैं? मेरा लेके जाते हो, दूसरा ईयरफोन मेरे में लगता ही नहीं है। मेरा ईयरफोन दे के अपना ले जाओ। इंस्टा से कॉल किए थे? अच्छा, इंस्टाग्राम से। आपको नहीं पता था क्या दीदी? नहीं भाई, भारती भाई, मुझको नहीं पता था। मैं किचन में थी ना, आपका नाम जब ले रहे थे ना सोनू भैया, तब बोले दीदी ये भारती भाई हैं। मैंने कहा अच्छा। आप बात भी किया था फिर भी आपको पता नहीं चला? सच्ची भाई, मुझे नहीं पता चला कि कैसे बात हो रही। मैं सोचू वीडियो कॉल किए हैं नंबर से या कुछ, ऐसा नहीं पता चला क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने नहीं आता ना, चलाई हूँ इसलिए पता नहीं चला। मैं भी थोड़ी जल्दीबाजी में थी ना, किचन में थी, बिजी थी, किचन में से आई थी, सब्जी फ्राई कर रही थी। आप भी सब्जी फ्राई कर रहे थे? मैं भी तो किचन में ही था। हाँ, मैंने देखा आप भी किचन में थे, वही तो कह रही हूँ। आप भी सब्जी बना रहे थे। मैं सोचा कि सोनू भैया होंगे तो मैं पुनः आपसे बात करूंगी। सोनू भैया तो 10:30 बजे तक थे, कल रात में भी थे, 10:30 बजे के बाद गए हैं। श्रेया, श्रेया है, हाँ श्रेया रोने वाली का नाम है। आज भी बहुत रोई थी। सोनू भैया उसको गोदी लेके गए थे, स्कूल छोड़वा के आए हैं। बाल उसका कंघी कर रही थी ना, कंघी में बाल थोड़ा सा फंस गया था और रो रही थी। रोते रोते गई स्कूल तक, फिर सोनू भैया गोदी लेके गए, उसको छोड़ के आए। मुझे खाना अच्छा से नहीं बनाने आता दीदी। कोई बात नहीं है भाई, मजबूरी है तो करना है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। यही तो जिंदगी है। कुछ अच्छा बनाने के लिए ना बहुत बुरे रास्तों से गुजरना पड़ता है भाई। आगे कहीं सक्षम हो जाओगे ना तो अपने जीवन की कहानी कैसे बताओगे जब एक बैग हो जाओगे तो? हम लोगों की दुआ है आप अपने जिंदगी में जरूर एकदम, जो आपकी खुशी है, जो आपका सोच है, वो पूरा होगा। मैं एग्जाम सेंटर पर चला गया था 8:30। अच्छा, 8:30, 9 बजे का फिर पेपर रहा होगा। पेपर कब का था? और यम्मी।
9:30 से। अच्छा, 9:30 से पेपर था भैया। भारती भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप अपने खुद के लिए अभी टाइम दो। सच बता रही हूँ, लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ, हमारे लिए ये खुशी है। एंट्री टाइम 9 बजे तक रहता है, इसके बाद नो एंट्री। पेपर में होता ही भैया, ऐसे ही कर लेते हैं। इसीलिए कह रही हूँ ना, अपने लिए टाइम दो अब इस टाइम। हाँ दीदी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बोल रही हैं। थैंक यू भाई। मैं अभी आया हूँ, इसलिए लेटे हुए लाइव देख रहा हूँ। तो खाना वाना नहीं खाए? पहले खाना ना खाना चाहिए ना। मैं खुद नहीं दिखूंगा दीदी। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? भारती भाई, ऐसा काहे बोल रहे हो, खुद नहीं दिखूंगा? बोलो क्यों भारती भाई? दीदी कल मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों भाई, बताओ, रीजन बताओ। आप मुझे भैया बोल रही थी। गुस्सा नहीं करते भारती भाई। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बहनों के लिए हमेशा बड़ा ही होता है। छोटा होता तो भी, बड़ा होता तो भी। ये चीज मैं कितनी बार आपको बोल दी। समय नहीं मिलेगा तो बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, कोई बात नहीं है। समय नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। आप एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा तो जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तब अच्छी खबरें सुनाना, इसका इंतजार रहेगा। मेरे पास अभी समय है, इसलिए मैं दिख रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है भारती भाई। हम लोग कामना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। आप लाइव में दिखेंगे नहीं कोई बात नहीं है, पर आप चाहे जहाँ रहें हमेशा आगे ही रहें, बढ़ते रहें, आपके कदम हमेशा बढ़ते रहें आपके उज्जवल भविष्य की तरफ। हम लोग यही कामना करेंगे आपके लिए। भाई हमेशा बहनों के लिए होता है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसीलिए तो कह रही थी ना आपको। आप बोल रहे थे भैया मत बोलो। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा बहनों के लिए बड़ा होता है। भाई थोड़ा सा समझने लग जाता है ना, तो एकदम पूरा पूरा पिता का फर्ज निभाने लगता है। आज का पेपर बहुत टफ था दीदी, इसीलिए बोल रही हूँ ना भाई। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अपने लिए मेहनत करिए, अपने लिए टाइम निकालिए अभी। इस पेपर में मास्टर साहब का भी हालत खराब रहता है। अच्छा, कौन सा पेपर था?
किस सब्जेक्ट का था भारती भाई? सब्जेक्ट कौन सा था? अब मैं सोच लिया हूँ कि मुझे जैसा आप भैया बोलेंगे मैं वैसे ही लाइफ से भाग जाऊँगा। कहाँ भाग के जाओगे भाई? बताओ, बहनें आपको नहीं पाएँगी क्या कि भाई कहाँ गया? आपके लिए रोएँगी, आप खुद ही आ जाओगे।